Hello guys, welcome to BioGuru to your own channel. Today we will discuss about the light reaction. जैसे कि आपने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट के दो मेन पार्ट हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा. ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगी और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन. So what is light reaction? Light reactions or the photochemical phase includes light absorption, water splitting, oxygen release and formation of high energy chemical intermediates ATP and NADPH. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes LHC within the photosystem first and photosystem second. You can say PS1 and PS2. The LHC light harvesting complex is made up of hundreds of pigments. अब बहुत सारे pigment molecule हैं bound to the proteins and antenna molecule या antenna. Each photosystem has all the pigments forming a light harvesting system called antenna. Mainly हमारे पास जो photosystem first and photosystem second है ये light reaction में part play करेंगे और जो बाकी हमारे पास accessory pigments होते हैं वो उनके spectrum को broad करेंगे. So देखिए pigment molecule light harvesting complex and photons क्योंकि जो सनलाइट है वो फोटोन की फॉर्म में फोटोन बंडल्स की फॉर्म में आएगी एंड देन इसके बाद जो LHC है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये एक्साइट होगा. एक्साइट होने के बाद अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एंड इट इज रिसीव्ड बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर. दीज पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. जैसे मान लीजिए P700 P680 P for pigment 680 700 जिनकी हम बात कर रहे हैं these are the wavelengths. A special chlorophyll A forms the reaction center. The reaction center is different in both the photosystem. In PS1 the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer. Hence it is called P700. इसे P700 इसलिए कहा because ये 700 लाइट के स्पेक्ट्रम को absorb करेगा. In PS2, it has absorption maximum at 680 nanometer and is called P680. MCQs arrange the sequence of events during light reaction. Oxygen release, water splitting, light absorption, formation of high energy chemical intermediates. So, 1, 2, 3 and 4, 4, 3, 2 and 1, 3, 2, 1 and 4, 2, 3, 1 and 4. Take your time. Yeah, it is 3, 2, 1 and 4. Now, which of the following pigments forms reaction center? A special chlorophyll A, a special chlorophyll B, xanthophyll or carotenoids? Yeah, a special chlorophyll A. Now, the electron transport system. Now electron transport में अलग अलग दो reactions पढ़ेंगे. एक हम non-cyclic और एक cyclic दो reaction पढ़ेंगे. In PS2 reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light. तो ये हमारे पास कौन सा आ गया chlorophyll A जो 680 की wavelength को absorb करेगा, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. These electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to an electron transport system consisting of cytochrome. Cytochrome B, B1, B3, B4, B6, etc. Movement of electrons from phosphatin to P700 is downhill in terms of oxidation reduction और redox potential scale. देखिए अब यह हमारे पास क्या है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. जब सनलाइट पड़ेगी इसने क्या किया, P680 को एक्साइट किया. P680 अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको, फियोफाइटिन को. फियोफाइटिन देन बाद में क्या करेगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसके बात कर रहे थे, देन P700 और साथ में P700 भी क्या होगा, एक्साइटेड. ये डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को फेरोडॉक्सिन को. इसने किसे डोनेट कर दिया, फेरोडॉक्सिन को. एंड देन ये NADP को रिड्यूस करते हैं NADPH प्लस H में. कैसे करेंगे इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड
as they pass through the ETS, electron transport system, but are passed on to the pigments of photosystem first. Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transported to another acceptor molecule that has a greater redox potential. These electrons then are moved downhill and are transferred to NADP to form NADPH plus H. तो ये reduce करेंगे NADP को NADPH plus H में. Transfer of electrons starting from PS second. Starting कहाँ होगी? PS second से uphill to the acceptor. Down the electron transport chain to PS1. Downhill. Then excitation of electrons transfer to another acceptor and finally downhill to NADP, causing it to be reduced to NADPH plus H positive या proton, is called the Z scheme, non-cyclic photophosphorylation. This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. देखिए ये है आपकी Z scheme. रेड स्कीम क्यों बोला गया? बिकॉज ऑफ दिस शेप. अब मान लीजिए यहाँ ये सनलाइट है. सनलाइट ने क्या किया? सनलाइट अपने फोटोन बंडल्स की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में इस पे एक्सपोज होगी. एक्सपोज होने के बाद P680 अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा. किसे डोनेट किया? फियोफाइटिन को. फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन, ये देखो ना PQ, इट इज प्लास्टोक्विनोन. देन साइटोक्रोम B3 B6, इसके बाद आता है PC प्लास्टोसाइनिन. देन अब ये वापस कहाँ आ गया? P700 के पास. शुरू कहाँ से हुआ था? P680. तो P680 से कहाँ गया ये हमारे पास? फियोफाइटिन. देन वापस कहाँ आएगा? P700 के पास. P700 फिर से डोनेट करेगा बिकॉज यहाँ पर भी लाइट है. ये भी एक्साइट होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा फेरोडॉक्सिन को. एंड देन इसके बाद ये NADP को रिड्यूस करते हैं NADPH प्लस H पॉजिटिव में. ओके, सो नाउ ये देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है. LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, NADP को रिड्यूस किया गया NADPH प्लस H में. सो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड. यहां जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका नाम है फियोफाइटिन एंड देन इट इज फेरोडॉक्सिन. ये हमारे पास LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. देन NADP को रिड्यूस किस में करते हैं? NADPH प्लस H पॉजिटिव. ओके, आगे इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे. देखिए यहां क्या था कि H2O. अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, LHC क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. यहां से इलेक्ट्रॉन्स अगर गए हैं, है ना, तो यह इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. वो इलेक्ट्रॉन्स किससे मिलेंगे? वाटर को स्प्लिट करके. वाटर स्प्लिट होता है आपके प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में. ये वही ऑक्सीजन है जो आपके एनवायरनमेंट में आती है जिसको आप इनहेल करते हो. सो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलिसिस और यू कैन से फोटोलाइसिस. सो हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली? अब जो PS2 है वो कॉन्टिन्यूअसली कैसे सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स को? द इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड फ्रॉम PS2 मस्ट बी रिप्लेस्ड. अब जो PS2 फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास. अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उनको रिप्लेस किया गया. वो वापस कहाँ से आएंगे? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. अब कॉन्टिन्यूअसली वाटर स्प्लिट होगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करेगा. ऑक्सीजन इज अ नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. The water splitting complex or oxygen evolving complex OEC associated with the photosystem second. जैसे मान लीजिए हम फोटोसिस्टम सेकेंड की बात कर रहे थे. फोटोसिस्टम सेकेंड हमारे पास यहाँ पर है. फोटोसिस्टम सेकेंड डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को. अब यहाँ H2O वाटर स्प्लिट होगा किसमें? हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स यहां ये इसको फुलफिल करेगा. इज दिस क्लियर? ओके, देन दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम सेकेंड. सो 2H2O ब्रेक होगा, 4 हाइड्रोजन
or you can say protons plus oxygen plus electrons. We need to emphasize here that the water splitting complex OEC is associated with the photosystem II, which itself physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid. Then where are the protons and oxygen formed like to be released? In the lumen of thylakoid. So now cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Living organisms have the capability of extracting energy from the oxidizable substances and storing this in the form of bond energy. देखिए सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज किया गया फिर उसे बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेंगे जस्ट लाइक एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स देन व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन देखिए फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ phosphate so the process through which ATP is synthesized from ADP is adenosine diphosphate and ATP is adenosine triphosphate तो डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड हुआ now it is adenosine triphosphate तो वो क्या हुआ फॉस्फोराइलेशन so what is photophosphorylation अब फॉस्फोराइलेशन क्या था addition of phosphate but addition of phosphate in the presence of sunlight is called photophosphorylation. So the process through which ATP is synthesized from ADP and inorganic phosphate in the presence of light is called photophosphorylation. Then when the two photosystems were in a series, two photosystem, photosystem I and photosystem II. First PS2 या photosystem second and then PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation. The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen in the Z scheme. Both ATP and NADPH plus H are synthesized by this kind of electron flow. आपके non-cyclic photophosphorylation के products हैं ये ATP and NADPH plus H. When only PS1 functional, अगर मान लीजिए हम PS2 को नॉन फंक्शनल मानते हैं, only PS1 is functional, the electron is circulated within the PS1, then phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. A possible location where this could be happening is the stroma lamellae. While the membrane of lamellae of the grana have both PS1 and PS2. फिर समझेंगे देखिए membrane और lamellae हम बात कर रहे थे while the membrane और lamellae of the grana have both PS1 and PS2 और जो stroma lamellae है वहां पे सिर्फ आपको PS1 मिलता है. The stroma lamellae lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme. तो वहां पे क्या होगा cyclic photophosphorylation. The excited electrons do not pass on to NADP but are cycled back to the PS1 complex through the ETC electron transfer chain. The cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP but not of NADPH plus H positive. Cyclic photophosphorylation occurs only beyond 680 nanometer wavelength. In green plants, cyclic photophosphorylation is additional source of ATP required for chloroplast activities. देखिए ये हमारे पास क्या है cyclic photophosphorylation. तो cyclic photophosphorylation में हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ इसको समझेंगे. देखिए cyclic photophosphorylation there is no PS2, there is only PS1 that is P700. P700 पर जब सनलाइट पड़ेगी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा किधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को. इट इज फेरोडॉक्सिन. इसने क्या किया अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा इनको बैकफ्लो किया. नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और यहाँ एडीपी से एटीपी का तो फॉर्मेशन हुआ बट एनएडीपी का रिडक्शन नहीं हुआ NADPH प्लस H में एंड आपका फोटो सिस्टम सेकेंड का भी कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है. सो अब देखिए जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं वैसे ही आपके क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे.
हाउ इज एटीपी सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट? तो वहां पर कैसे होगी? थ्रू कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. Chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism of ATP synthesis, like in respiration in photosynthesis too. ATP synthesis is linked to the development of proton gradient across a membrane. This time, these are the membranes of the thylakoids. There is one difference, though. Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane. It means in the lumen. While in respiration, in mitochondria, proton accumulate in the intermembrane space of the mitochondria when electrons move through the ETS, electron transport system. तो respiration में mitochondrias में जो protons का accumulation है वो कहाँ होगा? intermembrane space में. लेकिन chloroplast में कहाँ होता है? in the lumen of thylakoids. So steps that cause proton gradient. First, photolysis of water take place on the inner side of the membrane. The hydrogen ions accumulate in the lumen of the thylakoid. तो उनका accumulation कहाँ हुआ? In the lumen of the thylakoids. As electrons move through the transport chain, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron located towards the outer side of the membrane transfer its electron not to an electron carrier but to a hydrogen carrier. Okay? Now, plastoquinone. So hence plastoquinone removes a proton from the stroma while transporting an electron. So when this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side or the lumen side of the membrane. Hydrogen H positive या protons. Proton gradient across the membrane increases due to quinone cyclic flow of electron between plastoquinone and cytochrome B. Now step number 3, the NADP reductase enzyme is located on the stroma side. Stroma क्या था? Liquid portion of the membrane. Along with electron that comes from the acceptor of electron of PS1, Photosystem I, protons are necessary for the reduction of NADP to NADPH plus H. Because अगर यहाँ पर protons नहीं होंगे तो NADP का reduction possible नहीं है. These H positive or protons are also removed from the stroma. तो इनको भी remove कर दिया गया. Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decreases in number while in the lumen increase. Lumen में क्या था? Water splitting है तो वहां उनकी नंबर बढ़ती जाएगी और स्ट्रोमा के अंदर क्या है? नंबर कम हो जाती है. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in the pH in the lumen. अगर H positive concentration बढ़ेगी तो pH भी decrease होगा, acidic होगा. Then why are we so interested in the proton gradient? क्यों? For ATP formation. This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the release of energy. तो ATP formation के लिए proton gradient बहुत जरूरी है. The gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane to the stroma through transmembrane channels F0 of the ATPase. The ATPase enzyme consists of two parts. One called the F0 is embedded in the membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane. The other portion is called F1 and protrudes on the outer surface of thylakoid membrane on the side that faces the stroma. Just like this. देखिए ATPase F0 particle and F1 particle. F0 is embedded in the membrane and F1 particle protrude on the outer side of the thylakoid that faces the stroma. So, the breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the F1 particle of the ATPase, which makes energy packed as ATP.
जैसे हमारी स्कूटी है, स्कूटी में डायनेमो होता है ना, तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो घूमता है, उसमें क्या था, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम एज यहाँ पर भी जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज है, तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी केमिकल एनर्जी या एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सो नाउ कीमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपीएज एंड अ मेम्ब्रेन। देखिए यहां पर ये है। अब जैसे हम बात करें थाइलेकॉइड्स की, तो थाइलेकॉइड के अंदर H पॉजिटिव या प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा था यहां पर, और इसके इंक्रीज होने की वजह से अब ये जो F1 पार्टिकल या आपका एटीपीएस पंप है, इट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज और एटीपीएस पंप, यहां से आपके प्रोटॉन्स बाहर आते हैं, H पॉजिटिव बाहर आएंगे और एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। So, energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid lumen. ATPase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases enough energy to activate ATPase enzyme that catalyzes the formation of ATP. So, along the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP is used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, the fixing CO2 and for the synthesis of sugar. So, it is dark reaction. Now, MCQs dash ions help in photolysis of water. Mn, Mg, Cl are both 1 and 3. Yeah, it is both 1 and 3. Light reaction of photosynthesis results in the formation of oxygen, NADPH plus H, ATP, all of these. Yes, all of these